Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome back to Raw and Real, Samia's podcast. जहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है that breakups are not the end of the world. सुनने में आपको लग रहा होगा कि उफ ये जालिम ज़माना और ये कितना दुखी सा टॉपिक होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है because we are going to talk on a positive note. Yes, that's right. Breakups, of course, जब आप कहते हैं breakup, तो it could be a breakup of a relationship, it could be a divorce breakup. In any case, breakups are bad. So हम आज breakups के बारे में बात करेंगे in general कि breakups are not the end of the world. There's more to life. It's the beginning of a new one, and that's what I want to talk about. तो देखिए जी, ऐसा है कि breakups are devastating. Absolutely they are. More for women than for men, mainly because women are more emotional. I mean, it's a known fact. तो इस वजह से औरतें जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो breakups को ज़्यादा महसूस करती हैं. And according to a few researchers out there, of course, breakup की pain ऐसी होती है कि जैसे कि physical pain होती है. तो इसलिए आपको कई दफ़ा जब आपको breakup होता है तो ऐसा महसूस होता है कि आपके दिल में दर्द हो रही है और आप बीमार भी हो जाते हैं because आपको stress मिलता है. Stress से immune system weak हो जाता है. Immune system weak होता है तो फिर उससे बीमारियां लग जाती हैं. I'm not trying to disregard the emotions that are associated with breakups. I'm not trying to tell you that, oh, it's no big deal and take it lightly and just move on in life and everything will be a bed of roses. No, that's not what we're going to say, or that's not what we're going to talk about, because breakup is a very real thing which is taken very lightly by people around you. क्या यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? There's plenty of fish out there, एक नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, there's the next one. It doesn't work like that. वो कहते हैं ना कि आपको कब कोई क्यों पसंद आ जाए, you don't know. So if you're dating someone, if it's a romantic relationship, that's a very different scenario over there. If you have been married to someone and that marriage breaks up, that's a completely different scenario. And then if there are children involved, तो वो और ज़्यादा एक अलग वो हो जाता है, क्योंकि एक आपकी किसी से शादी हुई है, तो obviously when you get married to someone, no one thinks about कि oh, okay, I'm getting married to this person and if it works out great, if it doesn't, like maybe we'll divorce. Maybe some people think like that these days, but that's it, it'll be over. People usually get married thinking that they're going to last together forever, that this relationship, this bond, this union is going to last and they will grow old and they will die together. This is usually what people think. And when that doesn't work out, तो basically जब आपका वो ख्वाब टूटता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी से इस शख्स के साथ, ये शख्स मेरा ख्याल रखेगा और मैं इसका ख्याल रखूँगी और इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, जब वो ख्वाब टूट जाता है तो आपको उस ख्वाब के टूटने की बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है. This is why breakups are devastating. Now, why is there this pain or this hurt that you feel? As I said earlier, कि एक तो आपका वो ख्वाब टूट जाता है जो आपने देखा होता है. तो ख्वाब किसी भी चीज़ का आप देखें, अगर वो पूरा नहीं होता या वो टूट जाता है तो हर इंसान को दुख होता है, वो कैसा भी ख्वाब क्यों ना हो. तो इसमें जो आपने एक रिश्ता एक अपने दिमाग में शायद बना लिया होता है, एक आपने एक चाहे वो कोई बॉलीवुड की शाहरुख खान की मूवी देख के बनाया होता है या किसी भी तरह का, यू हैव दिस वी विल लिव हैप्पी फॉर एवर, वो वाला जब एक ख्वाब टूट जाता है, देन यू फील रिजेक्टेड, देयर इज़ रिजेंटमेंट, देयर इज़ depression, there are tears, there's anger at why things didn't work out, and then maybe the other partner's action, whatever he or she may have done. There's a lot of emotions that you experience. Sometimes people make that mistake of jumping from one relation to another relationship when they're trying to get over that breakup. And that is the worst thing ever. Rebounds happen. They do happen. Sometimes they happen a year later. Sometimes they happen immediately, and sometimes they are
uh, just sexual in nature. They're not even, emotional for that reason. So rebounds can happen, but to recover from that breakup, you need to allow it to take time for you to be over that person. That is extremely important. This is something that we do not allow ourselves, or even आपके जो आसपास के लोग होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं, they try to hook you up with another person. I'm not sure when that will release. जो रिकॉर्ड किया है मैंने अबाउट सिंगल पेरेंट्स के, कई दफ़ा आपके जो आसपास की फैमिली होती है, दे विल ट्राई टू गो अहेड एंड हुक यू अप विद, लाइक किसी से शादी करवा देंगे, या फिर आपको कोई और रिलेशनशिप के लिए, कोई डेट के लिए आपको आपकी डेट सेटअप कर देंगे. सो दिस ऑलवेज दिस रश टू गेट इनटू, ओके, माइंड ऑफ करने के लिए आप गो सी समवन एल्स. It may help sometimes, but then you need to allow yourself that time to recover from the breakup that you have experienced. Okay, so sometimes people wonder or ask, like, how long does it take for you to heal after a breakup? There's no right answer for that. It could be different for everyone. ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप 1 महीने में आप ठीक हो जाएं. कुछ लोग कहते हैं ना, यार चलो महीना हो गया ब्रेकअप को, यार अब क्या हो गया, अब 6 महीने हो गए, अब 1 साल हो गया है. It could be different for everyone. एंड हो सकता है किसी को 2 दिन ना लगे ब्रेकअप के बाद, किसी को महीना लग सकता है, किसी को साल लग सकता है, किसी को साल से भी ऊपर लग सकता है, डिपेंड करता है. एंड स्पेशली अगर आपकी शादी हुई है और अगर आपके बच्चे हैं तो वो तो फिर आई मीन दैट्स अ लाइफ लॉन्ग हीलिंग प्रोसेस, इन दैट रिस्पेक्ट. बट other than that, it really depends. And then if you have a toxic ex who keeps coming back into your life and keeps harassing you in certain ways, then it even becomes difficult. Then it could take you even longer. If you're dealing with a narcissist toxic ex, then it could take you longer to heal and to come out of that breakup. So it varies from person to person or relationship to relationship. Yeah, see, okay, so the things not to do when you go through a breakup is one thing that I always tell people: get off social media. Do not. मतलब अगर आपने ये पता करना है कि किसका ब्रेकअप हो रहा है या किसकी डिवोर्स हो रही है, तो आप फेसबुक पे चले जाएं और वहाँ पे जाके या किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाएं, और जब आप देखेंगे एक कोट्स रिलेशनशिप पे, और अल्लाह ने क्या कहा बीवी के हक़ के लिए, अल्लाह ने क्या कहा हस्बैंड के हक़ के लिए. यूजुअली वुमेन टेंड टू डू दैट, मेन डोंट यूजुअली पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, वुमेन डू दैट. तो यार मत करो. क्यों करती हो तुम अपने साथ ऐसे? क्यों तमाशा बनाती हो? व्हाई डू यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया? डोंट डू इट. Don't do it. I swear, like, don't ever post anything on social media about your personal life. एक तो वैसे ही उसका तमाशा बन जाता है, quite honestly. आपके इर्द गिर्द कौन कैसे लोग हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट, आपके दोस्त कैसे हैं या आपके रिश्तेदार मिलने वाले. मैं बहुत एक जनरल लेवल पे ब्रेकअप की बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ये सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ. तो एक तो वैसे ही एक तमाशा बना होता है लोगों में, ऊपर से जब आप सोशल मीडिया पे जाके डिफरेंट कोट्स डालना शुरू कर देते हैं. अच्छा, फिर होता क्या है कि अगर तो ये एक लोगों को वैसे ही आपके ड्रामों के बारे में पता है, ठीक है, उसके बाद ऐसी बात करते हैं लोग. बिलीव मी, आपके लिए वो आपकी ज़िंदगी है, आप किस पेन से गुजर रहे हो, ब्रेकअप की किस तकलीफ़ से गुजर रहे हो, क्यों ब्रेकअप हो रहा है, क्या कोई अब्यूज़िव है, कोई आपको फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली अब्यूज़ कर रहा है, आप किस ट्रॉमा से गुजर रहे हो, या फिर आप का ब्रेकअप जो है वो किसी भी और वजह से हो सकता है. लेकिन लोग क्या कहेंगे उसको? ड्रामा. कि जी ये आपका ड्रामा चल रहा है और ये आपकी एक तो मतलब कहानियाँ चल रही हैं, लोग इसको ये समझते हैं. तो फिर जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर देते हो, 2 दिन बाद फिर आप लोग साथ में होते हो, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कुछ कर दोगे, एक तमाशा बनाया होता है, लोग सिर्फ बातें करते हैं और हंसते हैं, एंड दैट्स ऑल दे डू. Like literally. So get off social media. Stop posting different quotations from Google and things from. अच्छा, पर ये भी बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि जब सब एक दूसरे को दिखाने के लिए पोस्ट कर रहे होते हैं. एक पार्टी पे गया है तो दूसरी भी पार्टी पे जाएगी, एक वेकेशन पे गई है तो दूसरा भी वेकेशन पे जाएगा. It's so funny to see all these things. And I'm sure you think that I'm being insensitive and calling it funny, but this is how the world perceives it.
दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड परसीव्स इट. लोग देख रहे होते हैं और वही जो दोस्त होते हैं ना, आप लोगों के जो दोस्त होते हैं, वही दोनों को तस्वीरें भेज रहे होते हैं, वीडियोस भेज रहे होते हैं, कह रहे हैं ये देखो इसने ये किया, वो देखो उसने वो किया. इट baffles me how people do things like that. तो ये चीज़ होती है. तो ये आप लोगों को ये लगता है कि वो जी ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त है. कोई किसी का दोस्त नहीं होता भाई. सब तमाशा देख रहे होते हैं. दुनिया सिर्फ एक तमाशा है और ये तमाशा देख रही होती है. वो गाना नहीं है एक पुराना, गोरों की ना कालों की दुनिया है, दिल वालों की दुनिया है, तमाशबीनों की. लोग सिर्फ तमाशे देखते हैं यार. आप लोग अपना तमाशा बना देते हैं. कोई एक गूगल से कोड लेके सुबह डाल देता है, कोई दूसरा लेके शाम को डाल देता है. व्हाट इज दिस? व्हाई? गेट ऑफ सोशल मीडिया. स्टॉप पोस्टिंग स्टफ. देखो, बिल्कुल जाओ फेसबुक पे, जाओ उधर देखो, अपना देखते रहो. फेसबुक देखा, किसी का लाइक किया, कमेंट किया, लव किया, चलो जी आगे बढ़ो. डोंट पोस्ट स्टफ. डोंट डू दैट टू योरसेल्फ. ठीक है. उसके बाद दूसरी चीज़, बदला लेना. डोंट गेट इनटू इट. बिलीव मी, डोंट गेट इनटू इट. डोंट. भाई मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो ब्रेकअप की जो मैं कहानी बता रही हूँ आपको, ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं जो पॉडकास्ट करती हूँ, जिसके बारे में बात करती हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब होता है. तो वो ब्रेकअप आपका जो है, अब यू नो, और मैंने सब करके देखा हुआ है. एक दफ़ा बदला लेके भी देख लिया. आपको वो एक दिल की खुशी मिलती नहीं. आपको मिल जाती है खुशी थोड़े अरसे के लिए, ऑनेस्टली, लेकिन द बेस्ट रिवेंज, I swear, wallahi, the best revenge is when you leave it up to Allah. ओए होए होए होए, मैं बता नहीं सकती कैसा सुकून मिलता है दिल को जब आप उस पर छोड़ देते हैं. और फिर वो आपको दिखाता है, वो आपको दिखाता है ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे होते हैं कि आप सोचते हो कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही हो सकता है. That's what you do. So, मतलब whoever it is that you believe in, this is not just all for Muslims, लेकिन honestly the best revenge is when you leave it up to God. Leave it up to God. Like I said, I have had a breakup where I did take revenge. I felt good, I'm not gonna lie. It felt really good. But I feel better and more at peace because the next time I decided not to take revenge. And I said, I'm gonna leave it up to God. And I'll let him deal with this. And that's the best thing you can do. Because his revenge, if you are true, if you have good intentions, if you didn't hurt someone, and if you genuinely loved and cared, you had genuine emotions for someone, and they didn't respect that, they didn't care about it, and they hurt you, they broke you, then let Allah deal with it. Let God deal with it. And believe me, it'll be the best revenge ever. Being alone is okay, but don't isolate yourself. Make sure you have friends, make sure you do go out, make sure you do dress up. And it takes time. Okay, so breakup को time दे यार, उसका वक्त लगता है. And like I said earlier too, कि उसको थोड़ा वक्त दें कि आप एक कुछ वक्त होता है कि आपका दिल नहीं करता कहीं जाने का या किसी से मिलने का. कोई बात नहीं. It's okay. It's okay. You know, some people are the type कि उनको हमेशा हर चीज़ का FOMO रहता है, fear of missing out. Don't worry about it, man. If you're used to going out, if you're used to partying, believe me, if you miss out going out one weekend or a couple of weekends or don't go out a few weekends, those clubs, those lounge, those bars will still be there and those parties will still be there. You can still go back like even 6 months later, a year later, and everything will be the same. It's the same stuff. So if you want to take a break sometimes from certain places, certain people, do that. It's actually very healthy. It's good for your sanity. It's good for your inner peace. Do it. A lot of men do this, and I'm not trying to stereotype. I'm just telling you things by what I have seen. Don't start substance abuse. That is something that you should stay away from. काफ़ी लोग ये करते हैं कि डिप्रेशन में उदास होके ब्रेकअप हो गया मीन्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो वो they'll start either with alcohol or other kind of drugs or other kind of substances. Try not to do that. Try not to do that. And this is why it's very important the company that you keep.
आपका सोशल सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, कैसा है? आर दे द सपोर्टिव टाइप? आर दे गोइंग टू encourage you to live a better life, a healthier life, to move on in life and to be there to listen to you, to understand when you're breaking down, understand you're having bad days because of the breakup, understanding that you need some time to get over it, but and allowing you to feel all those emotions, but then also being there to make sure that you don't fall into severe depression, also making sure that you don't become an alcoholic, also making sure that you don't become a drug addict. These things are extremely important. और यहाँ पे आई स्पेशली वांट टू स्पीक टू द women, वो लड़कियाँ या वो ख़वातीन जिनको ये लगता है कि डिवोर्स हो गई है अगर, तो बस उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूँ, अब ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, मुझसे दोबारा शादी कौन करेगा, बच्चे कैसे संभालूंगी, अब मैं क्या करूँगी, मेरी ज़िंदगी तो बेरंग हो चुकी है. प्लीज़ डोंट डू दिस टू योर सेल्फ. नो, नो, बिल्कुल भी नहीं. ये सिर्फ एक दौर है, ये सिर्फ एक वक्त है जो अभी है, और चला जाएगा. हाँ, वक्त लगेगा, हो सकता है कुछ महीने लग जाए, हो सकता है साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन एक वक्त है जो कि चला जाएगा. हाँ, पूरा हमेशा एक सा वक्त तो नहीं रहता है ना. बहुत घिसी पिटी सी मिसाल है कि अगर खुशियाँ नहीं रहती तो फिर गम भी नहीं रहेगा, अच्छा वक्त नहीं रहता तो फिर बुरा वक्त भी नहीं रहेगा. टाइम इज़ कॉन्स्टेंट. इट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली कीप्स चेंजिंग. वक्त ही तो है सिर्फ जो बदलता रहता है, हर वक्त बदलता रहता है, और आपको उस वक्त के साथ बदलना पड़ता है. आप बदलते हो. आपको कुछ अरसे के बाद, आई एम श्योर कितने ऐसे होंगे लोग जिनकी अगर डिवोर्स हुई या ब्रेकअप हुए हुए, तो उस वक्त वो यही सोचते होंगे कि यू नो कि दे थॉट दे नेवर गेट आउट ऑफ इट, कि हम तो बस इसी में, अब इसी दुख में, गम में पूरी ज़िंदगी गुजारनी है. और आई एम श्योर कि अगर इस बात को कुछ अरसा गुजर गया है, कुछ साल गुजर गए हैं, तो अब आप हंसते होंगे कि हाउ स्टूपिड ऑफ मी कि मैं ये सोचा कि मैं ऐसी गम में पूरी ज़िंदगी गुजारूंगी. नहीं, तो बहुत खुश हूँ, ज़िंदगी बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है. और ऐसा होता है. इस बात पे यकीन रखें, अपने ऊपर यकीन रखें, अपने खुदा पे यकीन रखें. एंड इट टेक्स टाइम, बट you have to believe that you will come out of this. You want to come out of this. You want to be happy in life. खुशी जो है ना, खुशी जो है ना, बड़ी ओवररेटेड है. हम सब किसी न किसी चीज़ में, यूजुअली हम इंसानों में खुशी ढूंढ रहे होते हैं. मुझे ये शख्स मिल जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरी इस शख्स से शादी हो जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं, अरे भाई, खुशी ऐसे थोड़ी मिलती है. आप खुद खुश रहना सीखो. मेरे पास एक दफ़ा, कई दफ़ा ऐसा मुश्किल वक्त आया है कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, और परेशान हूँ. बदन आई एम लाइक, अच्छा मैं क्या करूँ अब, यहाँ तो मैं बैठ के रो लूँ कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये स्ट्रगल है, या फिर जस्ट इट इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है, मैनेज करो, डील करो विद इट एंड मूव ऑन. अल्लाह कर ही देता है कुछ ना कुछ. खुद पे यकीन रखो, ऊपर वाले पे यकीन रखो कि वो तुम्हें कभी सड़क पे नहीं आने देगा इंशाल्लाह. तो हैव दैट फेथ इन यू. तो स्पेशली ऑल दोज वुमेन जिनके अगर इफ़ यू गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ ज़िंदगी बहुत ईजी है या ईजी हो जाएगी, नहीं, मुश्किलें हैं और होंगी, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. क़यामत फिर भी नहीं आएगी. आप अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने खुदा पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह एक दिन. बट जस्ट हैव फेथ. इट्स, दुनिया ख़त्म नहीं हुई. Don't end up dating or marrying the first person that comes along. you know uh, you can go out, meet someone. By dating I mean like serious relationship, that's what I mean. Go out, meet people, date different people, but you don't have to become serious with them. Like पहला ही शख्स जो आपको मिल गया, whether you're a whichever gender you are, कि या मिल गई तो बस यही है, और फिर उसी से शादी भी कर ली एंड ऑल ऑफ दैट. नो, एक्सप्लोर. अब तो आपकी नई ज़िंदगी शुरू हुई है, अब आपकी एक और ज़िंदगी शुरू हुई है. अब आप एक रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ है, वो चाहे रिलेशनशिप था, चाहे वो आपकी शादी थी, जो भी था ख़त्म हुआ है. स्टार्ट फ्रेश. सो एक्सप्लोर. वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना वो मूवी में डियर ज़िंदगी में, जब वो आलिया भट्ट को कहता है कि तुम क्या जो पहली कुर्सी देखती हो जाके ख़रीदने के लिए, तुम वो पहली कुर्सी ख़रीद लेती हो, या डिफरेंट कुर्सियों पे बैठ के देखती हो कि कौन सी वाली अच्छी है,
और उसके बाद डिसाइड करती हो कि कौन सी कुर्सी खरीदनी है. तो I'm not asking you to go sleep with everyone, by the way. I'm not telling you that. But what I'm saying is ke date different people, get to meet different people. And then you decide if you want to again get into a relationship with someone. And if you don't, then okay, have a good time and move on. That's what you do. अगर आपके पास काम के अलावा अगर आपके पास टाइम होता है तो डू समथिंग दैट यू एंजॉय. आप जो मे बी जो आपने पहले कभी नहीं किया हो वो कर लो. चाहे वो मे बी पेंटिंग हो, बुक्स पढ़नी हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई स्किल सीखनी हो, musical instrument सीखना हो. Maybe you want to learn how to play a guitar or a piano. Maybe you want to learn horseback riding. Maybe you want to learn swimming. Maybe you want to learn to ride a bike, or maybe you want to travel if you can afford to. That's always wonderful. कि आपके breakup के बाद आप go and travel, go see the world if you can. I think that's wonderful. And like I said, being alone is different, but don't isolate yourself. So if you have friends, make sure you keep on seeing your friends as well. It's good to have good company around. Unfortunately, breakups are not very mutual in a lot of cases. They're not consensual, they're not mutual. Unfortunately, breakups are usually very ugly. So a lot of times, and especially as a woman, you feel the need to have a closure, to say goodbye. But a lot of times it's not needed. No. I know that sounds like it's unfinished business. लेकिन क्या होता है कि कई दफ़ा वो goodbye कहने के और closure के चक्रों में it's like a spider web. You keep getting entangled in the same relationship, in the same toxicity, in the same issues again and again and again. And that's all because you're trying to get a closure. You're trying to say goodbye. You're trying to end it on a certain note and be like, okay, so this is it, and this is a goodbye, and I'm moving on from here, and you're moving on from here, and that's it. And we're decided we'll never see each other, blah blah blah. हम कभी बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, हम कभी एक दूसरे देखेंगे नहीं, कभी हम रास्ते में मिल जाएं तो पलट के गुजर जाना, and all of that kind of stuff, right? तो ये ऐसी नीड्स यूजुअली लड़कियों की होती है. आदमियों की ऐसी क्लोजर की नीड्स नहीं होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. So I think maybe you can correct me again. As always, do leave your comments if you are a male. लेकिन I feel कि it's not necessary. Just move on. Just move on, because you both know. जैसे कहते हैं ना, a lot of times, like I'll tell you honestly, I will not say the word unfriended, but I have backed off from a lot of people. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई दोस्ती तोड़ दी है कि कटती बस अब तुमसे कभी बात नहीं करूँगी मैं, और नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन डिस्टेंस योरसेल्फ, तो एक बैक फुट पे थोड़ा डिस्टेंस कर लिया अपने आप को, पीछे हट गए, जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर दैट, लाइक आई से, यू डोंट ऑलवेज हैव टू unfriend someone, but sometimes it's important to take a step back and just have that distance. People know what they have said or done. You don't have to explain yourself that, oh, hey, listen, this is why I'm going to distance myself because you said this or you did this. No. You just quietly do it because people know what they have done and people know what they have said. So you just quietly back off. It's very important to do that. The biggest mistake that some people do is believing or thinking that they can be friends. No. No, 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 no. No. No, you cannot be friends. एक बहुत किसी ने, बहुत बड़े शख्स ने एक बड़ी बात कही थी कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. No, you cannot be friends. It's not advisable to be friends, Now, unless if you were married and have children together, that's a different story. वो एक बिल्कुल different scenario हो जाता है. तो वो बच्चों को लेके, वो बच्चे चाहे आपके, कुछ लोग कहते हैं ना कि 18 साल तक तो डील करना ही पड़ेगा. नहीं भाई, आपको सारी ज़िंदगी डील करना पड़ेगा अब इस बच्चे की वजह से या बच्चों की वजह से.
क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो बचपन से लेके बड़े होने तक उनकी फिर ग्रेजुएशंस, फिर उनकी शादियां, उनके जॉब्स, उनके बच्चे, मतलब आपका ये अब बंधन टूट ही नहीं सकता। बच्चों की वजह से सारी ज़िंदगी के लिए आपका बंधन जुड़ गया है। तो आप दोनों खुद बेशक अलग हो जाएं, लेकिन आप उस तरह से कभी अलग हो नहीं सकते हैं कि आप कभी नो, जो वो नो कांटेक्ट वाली बात होती है ना, वो नो कांटेक्ट कभी हो नहीं सकता इफ़ यू हैव अ चाइल्ड बिटवीन यू. Now, of course, if you do not have a child, or if you were just in a relationship, if you were just married, or even if you were not married and you were just dating, then yes, be going no contact is extremely important, because that no contact is going to help you acknowledge and mourn the loss, right? And then सी जैसे कहा जाता ना कि क्यों आपके कोई फौत हो जाए तो उसके बाद आपको यू हैव 3 days टू मोर्न द लॉस. 3 दिन का अफसोस होता है, करेक्ट, अनलेस केस फॉर अ स्पाउस, वो भी हस्बैंड के केस में डिफरेंट है और वो इद्दत की बातें हैं, वो इट्स अ सेपरेट थिंग. बट अदर देन दैट, किसी की भी डेथ हो जाए, चाहे आपके पेरेंट्स की हो, अस्तगफुरुल्लाह की औलाद की हो, अल्लाह ना करे, किसी की भी डेथ हो जाए, आपका 3 दिन का अफसोस होता है एंड दैट्स इट, यू मूव ऑन. क्योंकि मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं है, ये बात सच है. अब वो चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे आपकी औलाद हो, कोई भी हो, आप उनके साथ नहीं चले जाते, राइट? और ना ही आप मरने वालों को अपने साथ एक जिंदा लाश लेके तो नहीं घूमते हैं. लाइफ गोज़ ऑन. अनफॉर्चुनेटली ये एक बिटर रियलिटी है. तो इसीलिए एक ब्रेकअप के बाद लाइफ गोज़ ऑन. सो यू have to understand this part, that you are going through breakup, you have a breakup, but after that, go no contact. कोई ज़रूरत नहीं है आपको to remain friends with somebody that you were not able to have a good relationship with. Of course, like I said, it probably didn't end on a good note. There's probably a lot of anger and resentment and, you know, a lot of things that went on between you both. So why stay friends now? Why try to have a good relationship now? Here's this interesting fact that about 70% of the time, women initiate the breakup rather than the men. So even if it's a divorce, 70% of the time the woman initiates the divorce and it's not the man who does it. This is according to a research that was done. And it makes a lot of sense. There's a lot of logic to it. क्योंकि a woman, I feel, is not just based on I being a woman. I think also the fact that, you know, the women that I know, a woman gives her all. एक औरत जो है वो अपनी जान, मतलब आखिरी हद तक कोशिश करती है और जान लगा देती है एक रिलेशनशिप को कामयाब बनाने में. और अब अगर वो ये डिसाइड कर ले कि उसको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो ये वो अपनी ज़बान से कह तब रही होगी, लेकिन उसके मेंटली डिसाइड उससे पहले कर लिया होगा. बहुत अरसा पहले उसके दिमाग में ही ऑलरेडी आ गया होगा कि दिस इज़ इट, आई एम डन. लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रही होगी और जब इवेंचुअली नहीं कुछ हुआ होगा तो वो डिसाइड करेगी, ओके नाउ आई एम डन एंड आई वांट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. दैट्स अ फैक्ट. It's not just my theory. It's actually a fact according to the research. So remember that कि अगर एक औरत कह रही है कि अब that's it, I want to break up with you, whether शादी हो या romantic relationship हो, that means she's done. वो मेंटली अब उसके दिमाग से तुम उतर गए हो भाई. तुम उसने जितनी कोशिश करनी थी ना, होता है कि दफ़ा a lot of men think कि वो अगर कुछ भी करते रहें, कुछ भी, मतलब इमोशनली या फिज़िकली अब्यूज़ करते रहें या कुछ भी करते रहें, कि ये तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि इसको मैं इतना कुछ कह चुका हूँ, इसने अभी तक नहीं छोड़ा. मैं इतना कुछ कर चुका हूँ, इसने नहीं छोड़ा. मैं इतनी दफ़ा चीट कर चुका हूँ, इसने नहीं छोड़ा. मैं इतनी गालियाँ दे चुका हूँ, इसने नहीं छोड़ा. मैं इतना इसको मार चुका हूँ, इसने नहीं छोड़ा. ये कहीं नहीं जाने वाली, ये सारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी. यहीं पे जो है, शील बी माई डोर मैट. इट डजंट हैपन. इट डजंट हैपन, क्योंकि एक वक्त आएगा कि उसकी बस हो जाएगी. आता है ऐसा वक्त. और वो फिर जब उसकी बस होगी, तब तुम कुछ मर्जी कर लो, तुम बिल्कुल, वो कहते हैं ना, 180 डिग्री चेंज हो जाओ, बिल्कुल ऑपोजिट. अगर तुम बिल्कुल मतलब लेफ्ट पे थे तो राइट पे हो जाओ. शैतान से तुम फरिश्ता बन जाओ.
उसका अब दिमाग नहीं बदलेगा, अब तुम उसके दिल में घर नहीं कर पाओगे भाई, अब बहुत देर हो गई. It's done and over with. It's over. So remember that. Once it's over for a woman, it's over for you. You know, that's, you just cannot get that. एक औरत जो होती है ना, वो आपको फौरन इस मुकाम पे डाल देती है, और फिर जब आप उससे गिरते हैं ना, आप दोबारा इधर तो क्या, आप इधर भी नहीं आ पाते हैं. ये बात हमेशा याद रखना भाईजान, जो भी है. So to wrap it up, I wanted to talk about breakups because I just wanted to reassure people out there that it's not the end of the world. Of course, you will feel this stomach ache कि कुछ पेट में दर्द हो रही है, कुछ एंग्जाइटी फील होगी, लगेगा वाकई में दिल में दर्द हो रही है. बैठे बैठे कभी आप कुछ भी फील नहीं कर रहे होगे और बस ऐसे लगेगा कि जैसे दुनिया में आपके आसपास कुछ नहीं है. और कभी कभी अचानक से आप रो पड़ोगे और चीख चीख के रोगे और चिल्ला चिल्ला के रोगे. ये सब इमोशंस बहुत रियल है. कभी कभी आप खुद पे गुस्सा करोगे, खुद पे आपको गुस्सा आएगा कि हाउ कुड यू विल फील स्टूपिड समटाइम्स. कभी आपको दूसरे शख्स पे गुस्सा आएगा, यू विल बिकम बिटर, यू विल स्टार्ट रिजेंटिंग पीपल. आपको सब कुछ बुरा लगने लगेगा. ये सब कुछ होगा और लगेगा कि बस योर वर्ल्ड इज़ crumbling down and it's the end and you're just devastated, and you will feel that you will never find love again, and you will feel that you'll never find happiness again. But I promise you will. I promise you, you will find happiness. You don't have to look for happiness in other people. You don't have to. It's all within you. आपके अंदर खुशी है, किसी और में मत ढूंढे. सबसे पहले मिलेगी, बाहर से भी मिलेगी, दूसरों से भी मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर खुशी ढूंढें. आपको एक दफ़ा वो मिल जाएगी ना, आप बिलीव मी, आपको बाहर से भी मिलना शुरू हो जाएगा प्यार. लेकिन सबसे पहले वो खुशी, वो प्यार अपने अंदर, अपने लिए. अपने आप को माफ़ करो कि आपसे जो गलती हो गई, या आपको ये लगता है कि आप कैसे इतनी स्टूपिड फैसले कर सकते थे. कोई बात नहीं यार, आप इंसान हो. इट्स ओके, इंसान जज्बात में बह जाता है. आपकी थिंकिंग, आप किसी को पसंद करते हो, किसी से आप इतनी मोहब्बत करते हो, इतना प्यार करते हो कि कई दफ़ा आप अपनी जजमेंट गलत कर देते हो. और आपके अगर कोई आसपास लोग बता भी रहे हों, कुछ आपको नज़र भी आ रहा हो, आप वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप चाहते हो कि आपने जो एक ख्वाब बना लिया हुआ है, एक फैंटेसी बना ली है, एक मूवी बना ली है अपने दिमाग में, तो आपको अब वो मूवी की एंडिंग, हैप्पी एंडिंग चाहिए. तो हैप्पी एंडिंग के लिए आप कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हो, आप कुछ भी कर लेते हो. और जब वो नहीं होता, आप अपनी पूरी एफर्ट्स डाल देते हो, और जब वो हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती है, तो फिर आपको अपने खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि यार मुझे पता था कि ये शायद नहीं होगी, लेकिन मैंने क्यों ऐसे किया, मैंने क्यों अपना आप पूरी तरह से दे दिया. इट्स ओके, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आपको एक आदत थी, एक शख्स आपके साथ हर वक्त होता था या थी, हर वक्त उस शख्स के आसपास होना, हर वक्त बात करने के लिए कोई, या कहीं जाने के लिए, या कहीं खाने के लिए, या कुछ भी करने के लिए हर वक्त आपके पास आपकी एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, उसकी आपको कमी फ़ील होती है. आप बहुत अकेले भी फ़ील करते हो. लेकिन वंस यू लर्न टू हैंडल इट, वो एक आदत बन जाती है आपके लिए. आपको कई दफ़ा ये भी एहसास नहीं होता कि शायद आपको वो आपकी आदत है जो अब छूट गई है. तो लाइक आई सेड अर्लियर कि एक विड्रॉल सिम्टम्स आपके होते हैं, राइट. तो आपको वो विड्रॉल्स हो रहे हैं. शायद आपको उस शख्स से अब प्यार नहीं रहा, या इतना प्यार नहीं है, या ये प्यार ही नहीं है. शायद ये सिर्फ एक आदत थी कि जो जब ख़त्म हुई तो आपको वो एक विड्रॉल होने लगा कि अच्छा मेरी आदत है रोज़ सुबह उठ के चाय पीना. अब जिस दिन चाय नहीं पी तो कुछ मिसिंग है, राइट. कि सर में दर्द हो रही है, क्यों मिसिंग है. तो वो एक आदत है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता है, एंड देन यू फाइंड आउट थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, यू लर्न टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, एंड यू लर्न टू डू अ लॉट ऑफ practical things in life. It's life changing. जैसे आप रियलाइज़ करते हो कि होल्ड ऑन,
मैं तो अपना इतना वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, मैं तो ये सब करने के भी कैपेबल हूँ, मैं तो काम में बहुत प्रोडक्टिव हूँ, मैं तो ये स्किल्स मुझे आती हैं, या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड इट्स लाइफ चेंजिंग. अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आफ्टर ब्रेकअप एंड यू नो you should be okay and everything will be fine. No, it will take time. It will, and like I said, it could take any amount of time for you. It could be a week, a month, a year, 2 years, whatever. Allow yourself that time. Don't rush for anything. Don't rush. Allow yourself time to heal, because it will create a better version of you. You know, आपकी journey में it will help you not just give you inner peace, and not only will you become a more calm and a stable and a sane and a happier person, you'll be a happier version of you, but also somewhere spiritually, you know, you'll find that inner peace, and I promise you it gets better. I promise you. I know if you're going through this tough time, आपको लग रहा होगा कि it will not get better, but always remember, time truly is the best healer. जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आप जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो शख्स याद भी नहीं रहता या रहती, वो शख्स कहाँ है, क्या कर रही है या क्या कर रहा है, ज़िंदा भी है या नहीं, आपको कई दफ़ा उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता. आपको you're like you're just going on in your life, and like I said, life goes on. That is, you know, एंड में किसी भी बात की एंडिंग जो है ना, वो यहीं आके होती है कि लाइफ गोज़ ऑन. ये 3 अल्फाज, कोई किसी के लिए ना रुकता है, ना आप रुकेंगे, ना कोई और रुकेगा, ना ज़िंदगी रुकती है, ना वक्त रुकता है. वक्त के साथ आप आगे बढ़ते रहें, तो यही समझदारी है. एक बात मैं कहूँगी जाते जाते कि टेक योर टाइम, allow yourself to heal, enjoy your life. If you can travel, definitely travel, and just love being with yourself. That's it. If you have good friends, great. Just keep very small circle of friends around you, and if you're feeling emotional someday, तो please stay off social media. Don't post anything over there. और उसके अलावा जो है, अपने खुद से खुश रहना सीखिए, दूसरों में खुशी मत ढूंढें. और तो क्या हुआ अगर ब्रेकअप हो गया? दुनिया में और भी बहुत लोग हैं, 8 बिलियन लोग हो गए अब दुनिया में, तो ये एक ही शख्स थोड़ी है कि जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूम रही है. और भी बहुत लोग हैं, देखें तो, ढूंढें तो. क्या होता है जब हम किसी एक शख्स के साथ होते हैं, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, तो ऑब्वियसली वही हमारी दुनिया होती है या होता है, और उसी के इर्द गिर्द जो है हम सब की दुनिया घूम रही होती है. लेकिन जब हम उस सर्कल से बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं, अरे वाह, यहाँ पे तो ये भी है, ये भी है, यहाँ पे तो ये आइटम भी मिल रहा है, वो आइटम भी मिल रहा है, तो मेरा तो दिमाग ख़राब था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इधर ख़राब करने लगी हुई थी. यहाँ पे तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं भाई. तो या यू नो, नाउ अगेन, unless you were married and have children together, you have to deal with your ex for the rest of your life. But other than that, the rest of you, go no contact, move on, take your time. It will feel bad. It will feel like the end of the world. You will feel all those emotions. It's okay. Feel those emotions, but then get over it and move on, because it's a big, beautiful world out there with lots of fun people. And you know what? छोटी सी जिंदगी है यार. इस जिंदगी को रो धो के किसी के पीछे तुमने मर जाना है. Why? क्यों? एक ही शख्स के पीछे रो रो के अपनी ज़िंदगी हलकान करके कोई महीने ज़ाया करने हैं, साल ज़ाया करने हैं, किसके लिए? अरे भाई, छोटी सी ज़िंदगी है, कल को पता नहीं हमने कब मर जाना है. उसको एंजॉय करो, मिलो, जाओ, देखो, और बाहर कौन कौन से लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, उनके साथ एंजॉय करो. यू नो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, सेलिब्रेट करो, ट्रैवल करो, जो करना है करो. हैव फन. That's what life is about. On that note, मुझे दीजिए इजाज़त. Until my next podcast, don't forget to subscribe and share your thoughts. Bye.